हिंदू पॅडमुळे तुम्हाला गणपतीची पूजा सोप्या भाषेत घरोघरी पोचवली जाते। सध्या गुरुजींना बोलावून पूजा करणे कठीण झाले आहे। यामुळे दररोज हिंदू पॅडला हिंदू पूजा आणि विधीसाठी हजारो लोकांकडून मागणी येत आहे। हिंदू पॅड सध्या पूजा आणि विधी यांचा व्हिडिओ लोकांपर्यंत पोचवण्याचे प्रयत्न करीत आहेत आणि त्यामुळे लाखो लोकांना जगभरात सगळीकडे याचा फायदा होत आहे। तुम्ही सुद्धा तुमच्या मित्रांबरोबर असाच व्हिडिओ शेअर करू शकता आणि या धार्मिक कार्यात सहभागी होऊ शकता। या विनायक चतुर्थीच्या शुभमुहूर्तावर गणपती तुमच्या कुटुंबाला आरोग्य, संपत्ती, भरभराट यासाठी आशीर्वाद देत आहे। आता आपण पूजेला सुरुवात करत आहोत। सर्वप्रथम आचमन करावे। आचम्य केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः। कुठलीही पूजा सुरुवात करण्यापूर्वी तुमच्या आजूबाजूचे अशुद्ध वातावरण नाहीसे होण्यासाठी सर्वप्रथम घंटांचा नाद करावा। आगमार्धन्तु देवानां गमनार्धन्तु राक्षसां, कुरु घंटारवं तत्र देवताह्वानलांछनम्। त्यानंतर दीप आराधना करावी, म्हणजे दिव्याची पूजा करावी। ओम उद्दीप्य स्वजातवेदोपघनं निरुतिं मम, पशोगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा। दीपाराधनमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। ज्योतिष्मतीं त्वा साधयामि, ज्योतिष्कृतिं त्वा साधयामि, ज्योतिर्विधीं त्वा साधयामि, भास्वतीं त्वा साधयामि, ज्वलन्तीं त्वा साधयामि, मल्मला भवन्तीं त्वा साधयामि, दीप्यमानां त्वा साधयामि, रोचमानां त्वा साधयामि, यजस्रां त्वा साधयामि, बृहज्योतिषन्तीं त्वा साधयामि, बोधयन्तीं त्वा साधयामि। ओम दीपराजाय नमः। गंधाक्षतपुष्पैरभ्यर्च्य आता गणपतीची षोडशोपचार पूजा सुरू करावी। ओम मम आग्ने वर्चो विहवेश्वस्तु वयं त्वें धानास्तनुवं पुषेम, मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम। मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः, ममान्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे अस्मिन्। मयि देवाद्रविणमायजन्तां मय्याशीरस्तु मयि दैवहूतिः, दैव्याहोतारावनिशन्तपूर्वेरिष्टास्यामतनुवा सुवीराः। मह्यं यजन्तममयानि हव्याकोतिः सत्या मनसो मे अस्तु। येनो मानिगां कतमच्छनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे। देवी षडुर्वीरुरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वम्। माहास्महि प्रजयामातनोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन्। अग्निर्मन्यं प्रतिनुदन् पुरस्ताददब्धो गोपाः परिपाहि नस्त्वम्। प्रथ्यं च यन्तु निगुतः पुनस्ते मयिषां चित्तं प्रभृदा विनेशत। धाता धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगुं सवितारमभिमातिशाहम्। इमं यज्ञमश्विना वा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्धात्। रव्यचान महिषः शर्म यगुं सदस्मिन् हवे पुरुहोतः पुरुक्षो। स नः प्रजायै हर्यश्वमृडयेन्द्रमानो रीरिषोमापरादाः। येन सपत्ना अपते भवन्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतान्।
वसवो रुद्रा आदित्या उपरि स्पृशमोऽग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन् हर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनजिदश्वजिद्यः इमन्नो यज्ञं विहवे जुषश्वास्य कुर्मो हरिवो मेधिनं त्वा देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा न मन्द्रेशमोर्जन्दुहानाथेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतो अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु याः फलनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिः प्रसूतास्थानो मुञ्चन्त्वगुंहसः फलदानकल्पोक्तसंपूर्णसकलफलावाप्तिरस्तु. गणेशाला फळ अर्पण करावे. आता गणपतीसमोर ध्यान करावे. त्यासाठी हातात अक्षता आणि फुलं घेऊन गणपतीसमोर हात जोडावेत. ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तें घृयुगं स्मरामि. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रेर्विजयो भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. स्मृते सकलकल्याणाभाजनं यत्र जायते पुरुषस्थमजं नित्यं प्रजामि शरणं हरिं. सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्. येषां हृदि स्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः. लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः. येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं. सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः. धूमकेतुर्गणाध्यक्षो पालचन्द्रो गजाननः. वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः. षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि. विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा. सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. उमामहेश्वराभ्यां नमः. अक्षतलु. वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः. शची पुरन्दराभ्यां नमः. अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः. श्रीसीतारामाभ्यां नमः. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः. तुमच्या शरीर शुद्धीसाठी आचमन करावे. आचम्या केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः. विष्णवे नमः. मधुसूदनाय नमः. त्रिविक्रमाय नमः. वामनाय नमः. श्रीधराय नमः. ऋषिकेशाय नमः. पद्मनाभाय नमः. दामोदराय नमः. सङ्कर्षणाय नमः. वासुदेवाय नमः. वासुदेवाय नमः. दक्षिणं नारसिंहाय नमः. चितनुजनार्दनाय नमः. उपेन्द्राय नमः. हरये नमः. श्रीकृष्णाय नमः. श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः. श्रीमन्महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः. तुमच्या हातात अक्षता घ्याव्यात. ओम उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे. अक्षतांचा वास घेऊन मागील बाजूस टाकाव्यात. यामुळे तुमच्या शरीरातील आणि आजूबाजूच्या वातावरणातील अशुद्धता निघून जाईल. यानंतर प्राणायाम करावा. ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम्.
आता तुमचं नाव, गोत्र, ठिकाण यांचा उच्चार करून संकल्प करावा. हा संकल्प ठिकाणाप्रमाणे बदलतो. ओम मम उपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यप्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यप्रदेशे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन स्वस्तिश्री जयनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां वासरः वासरस्तु अध्यवासरः भृगुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे वङ्गनविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ कुटुंबस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं भाद्रपदशुद्धचतुर्थी पर्वदिवसे विनायक नवरात्रि दिवसे प्रथम दिवसे विघ्नेश्वरस्वामी प्राणप्रतिष्ठापन सहित षोडशोपचार पूजनं च महं करिष्ये. तदंग कलशाराधनं करिष्ये. संकल्प केल्यानंतर कलशाची पूजा करावी. गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधू, कावेरी या नद्यांना कलशात आवाहन करावे. कलशस्य मुखे विष्णो कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितौ ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरात् सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा अर्ग्वेदोद यजुर्वेदः सामवेदो ह्यदर्वणः अंगैः सहितात् सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः. तुमचा हात कलशावर ठेवावा. ओम आकलशेषु धावते पवित्रे परिशिच्यते उक्तैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपोन्नमापो अमृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्चन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वराप. ओम कलशात पाणी एकत्र करावे. गंगे च यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेर्यौ जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारका. त्यानंतर कलशातील पाणी पूजेच्या सर्व साहित्यावर, गणपतीवर आणि स्वतःवर अर्पण करावे. ओम कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि संप्रोक्ष्य देवं संप्रोक्ष्य आत्मानां च संप्रोक्ष्य. आता प्राण प्रतिष्ठापनेला सुरुवात करावी. ओम अस्य श्री सिद्धिविनायक स्वामी देवता प्राण प्रतिष्ठापन महामन्त्रस्य ओम आं ह्रां क्रों यं यं लौ सं लं क्षं क्रों हां आं सिद्धिविनायकदेवताः प्राणाः अक्षयः प्राणाः देवता जीव इह स्थितानि सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनुश्चक्षुश्रुजिह्वाग्राणानि सुखं चरं तिष्ठं तु स्वाहा. पुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिहिनो देहि भोगं जोक्पश्चेम सूर्यमुश्चरं दमनमते मृडया न स्वस्ति अमृतं वैः प्राण अमृतमापः प्राणानेव यथास्तानमुपह्वजिते. स्वामिन् सर्वजगन्नाथा यावत् पूजा अवसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु. अतध्यानम्. आपल्या हाताला कंकण बांधावे. यामुळे तुम्ही पूजा मनापासून करण्याला मदत होते.
ఓం విశ్వేత్తాతే సవనేషు ప్రవాచ్యాయా చ కర్ధమగవన్నింద్రసున్వతే పారావతం యత్పురుసంభృతం వస్వపావృణ శరభాయ ऋषिबंधवे. गणपतीच्या हाताला कंकण बांधावे. ओम आचूतपत्रं विश्वेत्ताते सवनेषु प्रवाच्याया च कर्धमगवन्निन्द्रसुन्वते पारावतं यत्पुरुसंभृतं वस्वपावृणो शरभाय ऋषिबंधवे. रक्षाबन्धनमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु. एतत् सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु. ध्यान आवाहनादि षोडशोपचारपूजां करिष्ये. स्थिरो भव, वरदो भव, सुमुखो भव, सुप्रसन्नो भव, स्थिरासनं कुरुः. ॐ ॐ विघ्नध्वान्तनिवारणैकतरनिर्विघ्नाटवी हव्यवाट विघ्नव्यालकुलप्रमद्धगरुडो विघ्नेव पञ्चानना विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रवेधनकरी विघ्नाद्रिकुम्भोद्भवा विघ्नागौ गगनः प्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरः पातु नः. महागणाधिपतये नमः. सांगां सायुधां सवाहनां सुशक्ति पत्नी पुत्रपरिवार समेतम् अस्य बिम्बे गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ध्यायामि. वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ध्यानं समर्पयामि, आवाहयामि. रत्नखचितसिंहासनं समर्पयामि. ध्यानपूर्वकनमस्कारान् समर्पयामि. भवसञ्चितपापौघविध्वंसनविचक्षणं विघ्नान्धकारभास्वन्तं विघ्नराजमहं भजे. एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकम्. उत्तमं गणनाथस्य व्रतं सम्पत्करं शुभं भक्ताभीष्टप्रदं तस्मात् ध्यायेत् विघ्ननायकं. ध्यायेत् गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसन्निभं चतुर्भुजं महाकायं सर्वाभरणभूषितं श्रीवरसिद्धिविनायकस्वामिने नमः. ध्यानं समर्पयामि. आता गणपतीला पंचामृत म्हणजे पाणी, दूध, दही, तूप, मध आणि साखर अर्पण करावे. अपोहिष्टामयो भवस्थान ऊर्जे दधातना महेरनाय चिक्षसे यो वशिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः. तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा चनः. ॐ आप्यायस्व समेतते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य संगधे दधिक्रावन्नाकारिशं जिष्णारस्पश्य वाचिनः सुरभिनामुकाकरत्प्रण आयो गुंशितारिषत्. पोहिष्टामयो भवस्थान ऊर्जे दधातना महेरन्. शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वत्सवितोत्पुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्त्वौषधीः मधुनक्तमुतोषसि मदमत्पार्थिवगुं व्रजः मधुद्भ्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः स्वादुः पवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुहवीतु नाम्ने स्वाधुर्मित्राय वरुणाय वाजवे बृहस्पतये मधुमागम् अदाभ्यः या फलनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिः प्रसूतास्थानो मुञ्चन्त्वभुंहसः. वरसिद्धिविनायकस्वामिने नमः. प्रतिमाशोधनं करिष्ये. गजवक्त्रनमस्तेऽस्तु सर्वाभीष्टप्रदायका भक्त्या पाद्यं मया दत्तं गृहानद्विरदानव. वरसिद्धिविनायकस्वामिने नमः. చూపించి అక్కడ వదిలిపెట్టండి.
పాదయోపాధ్యం సమర్పయామి. గౌరీపుత్ర నమస్తేస్తు శంకరః ప్రియనందన. గృహానార్ఘ్యం మయా దత్తం గంధపుష్పాక్షతైర్యుతం. తర్వాత స్వామికి ఆచమనం. ఆచమనం సమర్పయామి. ఆపోహిష్టామయో భవస్థాన ఊర్జేదధాతన మహేరనాయ చక్షసే యోవశివతమోరసః స్తస్య భాజయతే హనః ఉషతేరివ మాతరః తస్మా అరంగమామవో యస్య క్షయాయ జిన్వథ ఆపో జనయథాచనః. శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి. ఆప్యాయస్వ సమేతుతే విశ్వతః సోమవృష్ణియం భవావాజస్య సంగధే. క్షీరేణ స్నపయామి. క్షీరస్నానాంతే దధిస్నానం. దధిక్రావన్నకారిషం జిష్ణోరస్వస్య వాజినః సురభినా ముఖాకరత్ప్రణ ఆయోగుంషితారిషతు. దధ్నా స్నపయామి. ఆ తర్వాత నెయ్యితో. ఓం శుక్రమసే జ్యోతిరసి తేజోసి దేవో వస్సవితోత్పునా త్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః. దధ్నా స్నపయామి. మధువాతారతాయతే మధుక్షరంతి సింధవః మాద్వీర్ణః సంతు ఓషధీః. మధునక్తముతోషసి మధుమత్పార్తివగుం రజః మధుద్యౌరస్తు నః పితా మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగుం అస్తు సూర్యః. మాద్వీర్గావో భవంతు నః. మధునా స్నపయామి. యాః ఫలనీర్యా ఫలా పుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః బృహస్పతిః ప్రసూతాస్థానో ముంచన్త్వగుంహసః. ఫలోదకస్నానం సమర్పయామి. ఆపోహిష్టామయో భువః. ఆకులతోంచి. స్థాన ఊర్జేదధాతన మహేరనాయ చక్షసే యోవశివతమోరసస్తస్య భాజయతే హనః ఉషతీరవ మాతరః తస్మారంగమామవో యస్య క్షయాయ జిన్వథ ఆపో జనయథాచనః. వరసిద్ధివినాయకస్వామినే నమః. शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। आता गणपती अथर्वशीर्ष म्हणून गणपतीला अभिषेक करावा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टिवागं स्वस्तनोभिः विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 हरिः ओम। ओम लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् अतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तातु अवपुरस्तातु अवोत्तरात्तातु अवदक्षिणात्तातु अवचोर्ध्वात्तातु अवाधरात्तातु सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तातु। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते
सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं मूलाधारास्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तिः त्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं वायुस्त्वं इन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धं एतत्तव मनुस्वरूपं नकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्यान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिताः सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्रीश्छन्दः श्रीमहागणाधिपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रतं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याधौ प्रकृतेत्पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः अमृताभिषेकोऽस्तु सुवर्णाभिषेकोऽस्तु दिव्याभिषेकोऽस्तु महागणाधिपतये नमः शुद्धोदकपञ्चामृतनारिकेलस्नानं समर्पयामि। अभिषेकानंतर गणपतीला अक्षता आणि वस्त्र अर्पण करावे। रक्तवस्त्रद्वयं चारु देवयोग्यं च मङ्गलं शुभप्रदं गृहानत्वं लम्बोदरहरात्मजा ॐ अभिवस्त्रा सुवसनान्यरुषाभिधेनो सुदुघा पूजमानः अभिचन्द्रा भर्तवेन हिरण्याभ्यश्वान् रतिनो देवसोम वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। आता गणपतीला यज्ञोपवीत जानवं अर्पण करावे। रजतं ब्रह्मसूत्रं च काञ्चनं चोत्तरीयकं गृहाण सर्वधर्मज्ञा भक्तानामिष्टदायकम् ॐ यज्ञापवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञापवीतं बलमस्तु तेजः। यानंतर थोडी फुलं व गंध अर्पण करावीत। ॐ चन्दनागरुकर्पूरा कस्तूरी कुङ्कुमान्वितं विलेपनं सुरश्रेष्ठप्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिपोहक्वये श्रियं गन्धान्धारयामि। गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थं गणपतीला हळदी कुंकू अर्पण करावे। अहिरव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेतुं परिबाधमानः हस्तज्ञा विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुं सम्परिपातु विश्वतः या गङ्गूर्यासिनी वाली या राकाया सरस्वती इन्द्राणी महव ऊतये वरुणानीं स्वस्तये सुमङ्गलीर्यं वधूरिमाहं समेत पश्यता सौभाग्यमस्यै दत्त्वा यादास्तां विपरेतना कुङ्कुमादिसुगन्धपरिमलपटवासद्रव्याणीं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि।
यानंतर गणपतीची फुलांनी अंगपूजा करावी। ओम गणेशाय नमः पादौ पूजयामि। एकदन्ताय नमः कुल्पौ पूजयामि। ओम शूर्पकर्णाय नमः जानूनि पूजयामि। ओम विघ्नराजाय नमः जंघे पूजयामि। ओम अखुवाहनाय नमः ऊरु पूजयामि। ओम हेरंभाय नमः कटिं पूजयामि। ओम लंबोदराय नमः उदरं पूजयामि। ओम गणनाथाय नमः नाभिं पूजयामि। ओम गणेशाय नमः हृदयं पूजयामि। ओम स्थूलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि। ओम स्कन्दाग्रजाय नमः स्कन्दौ पूजयामि। ओम पाशहस्ताय नमः हस्तौ पूजयामि। ओम गजवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि। ओम विघ्नहन्त्रे नमः नेत्रे पूजयामि। ओम शूर्पकर्णाय नमः कर्णौ पूजयामि। ओम फालचन्द्राय नमः ललाटं पूजयामि। ओम सर्वेश्वराय नमः शिरः पूजयामि। ओम विघ्नराजाय नमः सर्वाण्यंगानि पूजयामि। आता एक विमशती पत्र पूजा करावी, म्हणजे गणपतीला 21 पत्री वहाव्यात। ओम सुमुखाय नमः माचीपत्रं समर्पयामि। ओम गणाधिपाय नमः बृहतीपत्रं समर्पयामि। ओम उमापुत्राय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम गजाननाय नमः दुर्वारयुग्मपत्रं समर्पयामि। ओम हरसूनवे नमः दुत्तूरपत्रं पूजयामि। ओम लंबोदराय नमः बदिरीपत्रं पूजयामि। ओम गुहाग्रजाय नमः अपामार्गपत्रं पूजयामि। ओम गजकर्णाय नमः तुलसीपत्रं पूजयामि। ओम एकदन्ताय नमः छूतपत्रं पूजयामि। ओम विकटाय नमः करवीरपत्रं पूजयामि। ओम भिन्नदन्ताय नमः विष्णुक्रान्तपत्रं पूजयामि। ओम वटवे नमः दाडिमीपत्रं पूजयामि। ओम सर्वेश्वराय नमः देवदारुपत्रं पूजयामि। ओम फालचन्द्राय नमः मरुवकपत्रं पूजयामि। ओम हेरंभाय नमः सिन्धुवारपत्रं पूजयामि। ओम शूर्पकर्णाय नमः जाजीपत्रं पूजयामि। ओम सुराग्रजाय नमः गण्डकीपत्रं पूजयामि। ओम इभवक्त्राय नमः शमीपत्रं पूजयामि। ओम विनायकाय नमः अश्वत्थपत्रं पूजयामि। ओम सुरसेविताय नमः अर्जुनपत्रं पूजयामि। ओम कपिलाय नमः अर्कपत्रं पूजयामि। यानंतर गणपतीच्या 108 नावांचा उच्चार करून पूजा करावी। ओम गजाननाय नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम द्वैमातुराय नमः। ओम द्विमुखाय नमः। ओम प्रमुखाय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम विघ्नकर्त्रे नमः। ओम विघ्नहन्त्रे नमः। ओम विश्वनेत्रे नमः। ओम विराट्पतये नमः। ओम श्रीपतये नमः। ओम वाक्पतये नमः। ओम शृंगारिणे नमः। ओम आश्रितवत्सलाय नमः। ओम मंत्रकृते नमः। ओम चामीकरप्रभाय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम सर्वोपन्यासाय नमः। ओम सर्वकर्त्रे नमः। ओम सर्वनेत्रे नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम सर्वसिद्धये नमः। ओम पंचहस्ताय नमः। ओम पार्वतीनंदनाय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम कुमारगुरवे नमः। ओम सुरारिघ्नाय नमः। ओम कृतिने नमः। ओम सुप्रदीपाय नमः। ओम सुखनिदये नमः। ओम सुराध्यक्षाय नमः। ओम मंगलस्वरूपाय नमः। ओम प्रमदाय नमः। ओम प्रथमाय नमः। ओम प्राज्ञाय नमः। ओम मान्याय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम लंबजठराय नमः। ओम ह्रस्वग्रीवाय नमः।
ॐ महोदराय नमः ॐ मदोत्कटाय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ मन्त्रिणे नमः ॐ विष्णुप्रियाय नमः ॐ भक्तजीविताय नमः ॐ जीतमन्मदाय नमः ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः ॐ जयिने नमः ॐ यक्षकिन्नरसेविताय नमः ॐ गङ्गासुताय नमः ॐ गणाधीशाय नमः ॐ गम्भीरनिनदाय नमः ॐ वटवे नमः ॐ अभीष्टवरदाय नमः ॐ महागणपतये नमः ॐ शिवप्रियाय नमः ॐ शीघ्रकारिणे नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ भवाय नमः ॐ बलोत्थिताय नमः ॐ भवात्मजाय नमः ॐ पुराणपुरुषे नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ पुष्करोक्षिप्तवारिणे नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ अग्रपूज्याय नमः ॐ भक्तनिधये नमः भावगम्याय नमः ॐ जिष्णवे नमः ॐ सहिष्णवे नमः ॐ सथोत्थिताय नमः ॐ विघ्नान्तकारिणे नमः ॐ विश्वदृशे नमः ॐ विश्वरक्षाकृते नमः ॐ कल्याणगुरवे नमः ॐ उन्मत्तवेशाय नमः ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः ॐ अक्रान्तचितचित्प्रभवे नमः ॐ मणिकिङ्किणिमेकलाय नमः ॐ समस्तदेवतामूर्तये नमः ॐ अक्षोभ्याय नमः ॐ कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः ॐ प्रमोदाय नमः ॐ मोदकप्रियाय नमः ॐ कान्तिमते नमः ॐ धृतिमते नमः ॐ कामिने नमः ॐ कपित्तपनसप्रियाय नमः ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः ॐ ज्योतिषे नमः ॐ ब्रह्मविद्यादानभुवे नमः ॐ मङ्गलप्रदाय नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ अप्राकृतपराक्रमाय नमः ॐ सत्यधर्मिणे नमः ॐ सख्यै नमः ॐ संसाराम्बुनिधये नमः ॐ महेशाय नमः ॐ दिव्याङ्गाय नमः ॐ परजिते नमः ॐ समस्तजगदाधराय नमः ॐ श्रीविघ्नेश्वराय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्प अक्षतान् समर्पयामि. गणपतीला दुर्वा वाहून पूजा करावी. गणाधिपाय नमः ॐ अघनाशनाय नमः ॐ ईशपुत्राय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ मूषिकवाहनाय नमः ॐ उमापुत्राय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ इभवक्त्राय नमः ॐ कुमारगुरवे नमः ॐ वरसिद्धिविनायकस्वामिने नमः दुर्वारयुग्मपत्रां पूजयामि. यानंतर गणपतीला उदबत्ती ओवाळावी. ॐ वनस्पतिर्भवैर्दिव्यैर्नानागन्धैः सुसंयुतः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. दशाङ्गं गुग्गुलोपेदं छन्दनागरुसंयुतम् उमासुतं नमस्तुभ्यं गृहाण वरदो भव. साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं प्रियं गृहाण मङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापः. ॐ दीपं दर्शयामि. धूपदीपान्ते शुद्ध आचमनं समर्पयामि. गणपतीला नैवेद्य दाखवावा. ॐ भूर्भुवस्सवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयातु. सत्यन्तवर्तेन परशुञ्चामि मृतोपस्थरणमसि स्वाहा. ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा
ఓం సమానాయ స్వాహ. మధ్యే మధ్యే ఉదకపానీయం సమర్పయామి. पूर्वापोषणं समर्पयामि, उत्तरापोषणं समर्पयामि. यानंतर गणपती समोर विडा दक्षिणा ठेवाव्यात. ओम पूगीफलैः सकर्पूरैर्नागवल्लीदलैर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्. ताम्बूलचर्वणान्ते शुद्ध आचमनं समर्पयामि. कर्पूरमंगल नीराजन दीपम. तुपाचा दिवा लावून मंगल आरती करावी. घृतावर्तिसहस्रैश्च कर्पूरशकलैस्तथा नीराजनं मया दत्तं गृहाण वरदो भव. वरसिद्धिविनायकस्वामिने नमः. मंगलनीराजनम. ओम जय भवानी शंकराय चंद्रमौलिः कृतांत भय निवारणाय मां पाहि मंगलम्. जय भवानी शंकराय चंद्रमौलिये कृतांत भय निवारणाय मां पाहि मंगलम्. जय जय भवानी शंकराय चंद्रमौलिये कृतांत भय निवारणाय मां पाहि मंगलम्. अष्टमूर्तये भुजंगहारमकुटशोभिताय दुष्टदानवारणाय शिष्टमंगलम्. जय जय भवानी शंकराय चंद्रमौलिये कृतांत भय निवारणाय मां पाहि मंगलम्. वामदेवाय पंचवदन कमलशोभिताय सोमसूर्याग्निनेत्रशुभदमङ्गलम्. जय जय भवानी शंकराय चंद्रमौलिये कृतांत भय निवारणाय मां पाहि मंगलम्. परमहंस सारंगपानये दिगंबराय निरतिशय नंदरूप नित्यमंगलम्. जय जय भवानी शंकराय चंद्रमौलिये कृतांत भय निवारणाय मां पाहि मंगलम्. भूतनाद मंत्रकूटपुरजनावाश्रिताय गौतमी तीरवासकलय मंगलम्. जय जय भवानी शंकराय चंद्रमौलिये कृतांत भय निवारणाय मां पाहि मंगलम्. जय जय भवानी शंकराय चंद्रमौलिये कृतांत भय निवारणाय मां पाहि मंगलम्. मंगलनीराजन दीपं दर्शयामि. त्यानंतर कापूर लावून आरती करावी. ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारे भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. सम्राजं च विराजं च अभीश्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रश्रया मुखे तया मासगुं सृजामसि. मानहिंसेर्जातवेदगामश्वं पुरुषं जगतो अबिभ्रदग्न आगहि श्रिया मा परिपातया. नीराजनां ते शुद्ध आचमनं समर्पयामि. वरसिद्धिविनायकस्वामी देवताभ्यो नमः. कर्पूरानन्दमङ्गलनीराजनदीपं दर्शयामि. नमस्करोमि. हर नमः पार्वतीपते हर हर महादेव. जय बोलो गजानन महाराज की जय. यानंतर हातात अक्षता आणि फुलं घेऊन गणपतीची प्रार्थना करावी. मंत्रपुष्पं धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः
त्वमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदगुं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यश्च किञ्चिश्च गत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यतोमुखम् अथो निष्ट्यावि तस्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं पद्भ्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजलः कविः तिर्यगोर्ध्वमदश्यायैरश्मयस्तस्य सन्तता स्वन्तापयति स्वन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो इदमध्यस्त्वाद्विद्युल्लेकेव भास्वरा नीवारशोकवत्तन्वी पीताभास्वस्य नोपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्मः स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो राजाधिराजाय प्रसंयस्याहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे स्वमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यगुं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायिष्य सार्वभौमः सार्वायुषः आन्धाता परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराळिते तदप्येष श्लोकोऽभिगीतमरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन् गृहे अवीक्षितस्य कामप्रियैर्विश्वैर्देवाः सभासद इति अदैतं विष्णवे चरन्निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठति स्तोत्रजुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि न विष्णुप्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दर्गिः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् वाग्देव्यै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् तत्पुरुषाय
विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। वरसिद्धिविनायकस्वामी देवताभ्यो नमः। पादारविन्दयो दिव्यसुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिण गणपतीला प्रदक्षिणा घालून नमस्कार करावा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणपते पते। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। प्रदक्षिणत्रय नमस्कारान् समर्पयामि। पुनः पूजांच महं करिष्ये। गणपतीला आरतीच्या शेवटी हळद कुंकू फुलं आणि अक्षता वाहाव्यात। चित्रमाश्चादयामि पक्कन పెట్టేసేయండి। चामराभ्यां बीजयामि। गीतं श्रावयामि नृत्यं नाटयामि वाद्यं घोषयामि। समस्तराजोपचार भक्त्योपचार शक्त्योपचार मंत्रोपचार तंत्रोपचार शास्त्रोपचार पूजनेन भगवान् सर्वात्मक सर्वं श्री वरसिद्धिविनायक स्वामी देवता चरणारविन्दार्पणमस्तु। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपः पूजां क्रियादिशो न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते। अनया ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजनेन भगवान् सर्वात्मक सर्वं श्री वरसिद्धिविनायक स्वामी देवता चरणारविन्दार्पणमस्तु। Dharmo rakshati rakshitaha. It means if you protect dharma, dharma protects you. You can also be a part of this noble cause of spreading the fragrance of Hinduism by donating small amount of money. You can donate online through PayPal. The PayPal ID is hindupad@gmail.com and you can also send donations through bank transfers. For more details, check donate page on hindupad.com.